you all are doing good. So here I Gandhi Kumar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management. So here I'm back with an online lecture series on HRM subject. So let's start the lecture. So see guys, in last lecture we discussed the functions of HRM. In today's lecture we are going to discuss objectives of HRM and the HRM policies. Okay, so let's start the lecture. Let me show you the slide. Yes. So we see these are some objectives of HRM. So first is to help in achievement of organizational goals. So what is the main objective of HRM? What is the main objective of HRM? Is to help in achieve of organizational goals. So what the HRM will do? The main purpose of HRM is to help the employees in achievement of organizational goals. तो HRM क्या करेगा, आपके जो भी एम्प्लॉयज होंगे उन एम्प्लॉयज को आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट्स होंगे उनको अचीव करने में हेल्प करेगा थ्रू द ट्रेनिंग, थ्रू द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ये सब चीजों देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या कैसे वर्क आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के या कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करवा के कुछ और एक्टिविटीज कंडक्ट करवा के आपको हेल्प करना कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ओके. Second is to employ skills and the abilities of workforce efficiently. To employ skills and abilities of workforce efficiently. तो ऐसे एक एम्प्लॉय की स्किल्स और एबिलिटीज को इंक्रीज करना है सो दैट वो एफिशिएंटली वर्क कर सके. आपकी जो भी वर्क फोर्स है उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को कैसे एम्प्लॉय करना है ताकि एफिशिएंटली वर्क हो सके. उसके लिए भी एचआरएम कंटिन्यूअसली वर्क करता है कि आपके एम्प्लॉयज को कैसे एनकरेज करा जाए, कैसे एंथुजियास्टिक तरीके से उनको एनकरेज किया जाए सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सके, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके. ओके. Then next objective is to provide organization with well job trained and well motivated employees. तो कोई भी organization को well trained और well motivated employees provide करवाने का भी एक objective होता है HRM human resource management का. एक objective ये भी होता है कि organization को well trained और well motivated employees दिलवाना ताकि उन जो भी organization के objectives है उसके लिए वो जल्दी से जल्दी और टाइम से नॉट जल्दी on the time objectives of the organization can be achieved. Okay. Next is to increase employees job satisfaction and self actualization. So देखिए ये तो ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वर्क करता है और उसके एक ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवाना एक वर्क होता है एचआर मैनेजर का. लेकिन एचआर मैनेजर का काम यही खत्म नहीं हो जाता कि वो उन्होंने अच्छे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवा दिया. दैट्स ऑल. उन एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेटेड रखना है, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे, उनको सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे इंक्रीज करना है सो दैट वो एम्प्लॉयज का रिटेंशन हो सके, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबे टाइम तक वर्क कर सके. तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने आप में जो सोशल उनकी नीड्स है, जो सोशल उनके रिक्वायरमेंट्स है उनको कैसे फुलफिल करवाना है थ्रू द प्रॉपर रेम्यूनरेशन और उनकी जो भी सोशल रिक्वायरमेंट है उनको आपको कैसे फुलफिल करना है. तो उन सब चीजों पे भी एचआर मैनेजर को वर्क करना है. ओके. सो दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआर. देन टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. तो आपको जो क्वालिटी है वर्क लाइफ के, मतलब वर्कर्स के वर्क की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना होता है. एक जो क्वालिटी है आपके वर्क फोर्स की वर्क करने की, कामों की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करना और उसको मेंटेन करके रखना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट इज to communicate HR policies to all the employees. HR की क्या क्या पॉलिसीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, उनको कम्युनिकेट करना टू द ऑल एम्प्लॉयज को. क्योंकि देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली होता है किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके
मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है और उनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा रही है उसका पता उनको होना चाहिए। तो एचआर डिपार्टमेंट का एक और काम क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज उनके लिए बनाई है आपने एम्प्लॉयज के लिए वो उन तक पता उनको पहुंचाना कि आपके लिए क्या क्या पॉलिसीज है, एटलीस्ट उनको तो उनकी पॉलिसीज के लिए पता होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एचआर डिपार्टमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर एक्सेप्टिव डिपार्टमेंट रखने का ऑब्जेक्टिव क्या, to communicate HR policies to the all employees. Okay, so these are the objectives or main objectives of HR, human resource management. Okay? These are the objectives of human resource management. Now, next is HRM policy. So, what is the HRM policy? तो बेसिकली पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो पॉलिसीज होती क्या है, तो अगर हम जनरल लाइफ में भी पॉलिसीज की बात करेंगे तो हम पॉलिसीज का मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमको वर्क करना होता है। तो पॉलिसीज एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि हमको कैसे वर्क करना है, जो आपको बताती है आपको कैसे वर्क करना है। कुछ लोगों के कुछ लाइक हमने देखा है जनरल लाइफ में कुछ लोगों के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस प्रिंसिपल की कुछ पॉलिसीज होती है, उसी पॉलिसी में प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो एचआरएम पॉलिसीज भी क्या है कि आपको किस अकॉर्डिंग वर्क करना है उसके लिए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड एचआरएम पॉलिसी। So let's see the definition of HR policy. Policies are general statements that guide thinking and actions of decision making. So policies एक general statements होते हैं, general principles होते हैं जो guide करते हैं लोगों को कि आपको कैसे क्या क्या किस टाइप के डिसीजन लेने हैं और आपके क्या एक्शन प्लान होंगे इन डिसीजन। It is the plan of action. Human resource policies or the personal policies are that set of organizational process which seek to establish and maintain the employment relationship. तो आपके पॉलिसीज क्या होगी, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस टू सीक टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो आपका एम्प्लॉय के रिलेशनशिप क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कैसे होंगे, एम्प्लॉय के रिलेशनशिप एम्प्लॉय से कैसे होंगे, उसके बारे में उसको भी एक पॉलिसी के उसकी भी पॉलिसी बनाना कि हमको कैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशन रखें। Now there is some definition of HRM policies which is given by various persons or various economists. First is according to Brewster and the Richfield. So Brewster and Richfield ने क्या definition दी HR policies की? HR policies are a set of HR policies are a set of proposals and actions that act as a reference point for the manager in their dealing with the employee. तो उन्होंने क्या बोला कि एचआरएम पॉलिसी एक सेट ऑफ एक्शंस है, सेट ऑफ प्रपोजल्स है जो आपको गाइड करेगा, जो एक एचआर मैनेजर को गाइड करेगा कि आपको एम्प्लॉयज के साथ कैसे डील करनी है, उसके लिए आपको गाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड एचआर पॉलिसी। देन next definition is according to Armstrong. What is the definition of Armstrong? Personal policies or you can say HR policies provide the guideline for a variety of employment relationships and identities the organization initiated in recruitment, selection, development, promoting, compensation, innovating, and integration of the human resources. So, personal policies या HRM policies आपको प्रोवाइड करवाते हैं गाइडलाइन, किस चीज की गाइडलाइन, क्या आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशंस और initiatives so initiated in recruitment तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्रूटमेंट होंगे, इनिशिएट क्या होगा रिक्रूटमेंट में, उसको आइडेंटिफाई करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना, मोटिवेशन देना और इंटीग्रेशन करना, ये सारे वो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है क्या एचआरएम पॉलिसी अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रांग के अकॉर्डिंग एचआरएम पॉलिसी वो पॉलिसीज है जो आपको इन सब वर्क के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो दिस इज द definitions of HRM policy. तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो HRM policy गाइडलाइंस जो आपको बताती है कि आपको कैसे वर्क करना है। ओके, एचआर मैनेजर के लिए गाइडलाइंस जो आपको बताती है कि कैसे वर्क करना है, एम्प्लॉइज से कैसे वर्क करवाना है, उनको कैसे सेटिस्फाइड रखना है, कैसे उनको एंथुसियास्टिक रखना है। ओके, नाउ
related to objectives. Second is easy to understand. Third is precise. Fourth is stable as well as flexible. Fifth is based on facts. Sixth is appropriate number. Seventh is just, fair, and equitable. Eighth is encourage self-development. And nine is reasonable and is review. So now all these characteristics we will study in detail. So let's see here. So let's discuss all these characteristics in detail. फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव. तो आपकी एचआरएम पॉलिसी कैसी होनी चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे मैच होती है. ऐसा नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, पॉलिसी अपने ऐसे बना दी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मैच ही नहीं करती है, वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी. देन हाउ कैन यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव इफ योर एचआरएम पॉलिसी इज नॉट रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव? So first and foremost thing for sound HRM policy is these policies must be related to your objectives of the organization. So let's see, policies must be capable in relating objectives to functions, physical factors, and company personnel. Okay. Then second is easy to understand. Easy to understand policy should be solid, indefinite, positive, clear, and understandable language. Stated. The policies should be stated in definite, positive, clear, and understandable language. जो भी आपकी पॉलिसी होगी वो ऐसी पॉलिसी मत सेट कर देना कि वो किसी को समझ में ही नहीं. एक अच्छी पॉलिसी किसको बोलेंगे जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, डेफिनेट हो, पॉजिटिव हो, क्लियर हो, किसी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली पॉलिसी नहीं हो. The next is precise. Your policy should be sufficiently comprehensive and precise limit. तो आपकी जो भी आपकी पॉलिसी होगी वो प्रिसाइज वे में आपको एलिबरेट मीन्स आपकी जो भी पॉलिसीज है वो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वे में होनी चाहिए ताकि और प्रिस्क्राइब लिमिट एट द सेम टाइम यू शुड केयर अबाउट योर प्रिस्क्राइब लिमिट. आपके लिमिट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी होनी चाहिए. एक्यूरेट नॉट अ रोल फॉर द प्रिसाइज इज एक्यूरेट. आपकी जो भी पॉलिसी होती है एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेट पॉलिसी होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज स्टेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल. तो आपकी जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए वो स्टेबल तो होनी चाहिए बट वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए. स्टेबल भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए. फ्लेक्सिबल मतलब अगर आपकी कुछ डिफरेंट कंडीशंस आ जाती है तो आप अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो. फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. एट द सेम टाइम स्टेबल भी होनी चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि आपको हर 2 दिन में आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज को चेंज करेंगे, अपनी एचआरएम पॉलिसीज को चेंज करेंगे. तो एचआरएम पॉलिसी जो आपकी होगी स्टेबल भी होनी चाहिए एज वेल एज फ्लेक्सिबल. कुछ अपोजिट सिचुएशन आते हैं तो अपनी पॉलिसी को चेंज भी कर सकें और इन नॉर्मल कंडीशन आपकी पॉलिसी क्या है स्टेबल भी. So see, personal policy should be stable enough to assure people that there will be no drastic overnight change. तो ऐसी आपकी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए कि आपको ओवरनाइट ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपकी पॉलिसी. Then next is based on facts. Personal policy should be built on the basis of facts, sound judgment, and note and personal feeling and appropriating decisions. Opportunistic decision. So जो भी आपने एचआरएम पॉलिसी बनाई है फैक्ट्स की बेस पे होनी चाहिए, आपका साउंड जजमेंट की बेस पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉलिसीज आपने बना दी है उसका जो फैक्ट से जो आपके एक्चुअल लाइफ से रिलेट ही नहीं करती जैसा वैसा करना पॉसिबल ही नहीं. ओके. कुछ आपके लाइक फॉल्स डिसीजन पे या फॉल्स फैक्ट्स पे बेसिस नहीं होना चाहिए. और एंड नोट इन पर्सनल फीलिंग ऑन अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजन. कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए. पर्सनल फीलिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो कोई पर्सनल फायदा उसमें नहीं होना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट इज एनकरेज सेल्फ डेवलपमेंट. आपकी पर्सनल पॉलिसीज या एचआरएम पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए जो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एम्प्लॉइज है उनको एनकरेज करें सेल्फ डेवलपमेंट. तो इट शुड बी यूनिफॉर्म ऑथर्स ऑथराइजेशन लीडरशिप स्टाइल टू पार्टिसिपेट लीडरशिप स्टाइल. तो आपकी जो भी एचआरएम पॉलिसी तो वैसे होनी चाहिए एनकरेज करें आपके एम्प्लॉइज को सेल्फ डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज रीजनेबल. आपकी जो भी पॉलिसी हो रही है रीजनेबल होनी चाहिए कि जो पॉलिसी अप्लाई हो सकती है. पॉलिसीज आपको बनानी है तो अप्लाई हो सके जो जिनमें अकम्प्लिश होने की कैपेबिलिटी. तो रीजनेबल होनी चाहिए. कोई भी पॉलिसी जो आपको नहीं बनानी. नेक्स्ट इज रिव्यू. Periodic review of the personal policy is estimated to
मैनेजरियल सेगमेंटेशन। तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होगी, जो एचआर पॉलिसी होगा, उनके टाइम टू टाइम आपका रिव्यू होना चाहिए। टाइम टू टाइम उनका रिव्यू होना चाहिए कि क्या वो आपकी जो भी रनिंग एनवायरमेंट है उसको सूट करती है, नहीं करती है, या उन पॉलिसीज पे उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वर्क किया जा रहा है, नहीं करा जा रहा है। So these are the characteristics of the HRM policy. Okay. Now we will discuss the types of HRM policy. So there is various type of HRM policies. Let's see. These are the types of HRM policies. First is originated policy. Second is appeal policy. Third is imposed policy. Fourth is general policy. Fifth is specific policy. Next is implied policy, and last is written policy. So first we will discuss the originated policy. So what is the originated policy? So let's see. Let me show you the slide. Just wait for a second. So what is the originated policy? So in originated policy, these are the policies usually established by senior manager in order to guide their subordinates. So if an superior establish some or the formulate some policies to guide their subordinates, then these kind of policy will be known as originated policy. So if any superior or the senior manager formulated any policies to guide their subordinates, then these policies will be known as originated policy. Okay. The next policy is, your second policy is appeal policy. So what is appeal policy? Next is appeal policy. This is not an action policy which is made by the starting. An appeal policy arises from the appeal made by the subordinate manager to his superior for deciding an important case. This need for such policy may be the need for such policy may be arise because the particular case has been covered by any policy, has not been covered by the policy. तो अपील पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होगी? ऐसी पॉलिसी जो आपने स्टार्टिंग में नहीं बनाई, बट कुछ सिचुएशंस या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है जिनके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ रही है, और जो भी सिचुएशंस आई है वो किसी और पॉलिसी में कवर नहीं होती है, किसी भी पॉलिसी में उस प्रॉब्लम को कवर नहीं किया गया, then you will formulate a new policy, that appeal policy. अगर किसी ने अपील करी है ऐसी पॉलिसी की, then you have to prepare the appeal policy. Okay? Then next is imposed policy. So what is imposed policy? Let's see. Imposed policy arises from the influence of some outside agencies like government, tax companies of a business and house. ऐसी पॉलिसीज जो किसी ने आपके ऊपर इम्पोज करी है, गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है, किसी इंस्टीट्यूशन ने, आपके रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ने, आपके जो भी रेगुलेशन अथॉरिटी है उन्होंने आपके ऊपर इम्पोज करी कि ये पॉलिसी आपको बनानी ही बनानी। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो हमको गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए बनानी पड़ती है। So these kind of policy will be known as imposed policy. Okay. Next is implied policy. What is implied policy? Sometimes policy may not be clear stated and the actions of manager, particularly at higher levels, provide guidelines for the actions for the lower level. तो देखिए implied का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो आपको डिफाइन नहीं होते, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, बट आपको देख के आपको खुद से आप वो वर्क करना स्टार्ट कर देते ड्यू टू द नेचर। जैसे हम किसी मंदिर के सामने जाते हैं तो कहीं पे भी किसी भी गाइडलाइन में कहीं पे भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है कि जब आप मंदिर के सामने जाएंगे तो आप हाथ जोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जैसे ही हम किसी मंदिर के सामने जाते हैं हम अपने आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, या किसी भगवान की फोटो के सामने जाते हैं तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो आपका इम्प्लाइड नेचर है कि वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं होती है, वो नेचर जो आप वर्क करते हैं उनके थ्रू गाइडलाइन मिलती है दूसरों को भी ये करने की। हमको कहाँ से गाइडलाइन मिली कि लोग, हमने जब अपने बड़े लोगों को देखा तो वो भी ये सेम चीज करते थे कि मंदिर के सामने जाते हैं वो हाथ जोड़ते। अब हम भी क्या करते हैं, किसी भी गाइडलाइन में आपको किसी ने बताया नहीं है, हमारी वो क्या है? इम्प्लाइड पॉलिसी है। ऐसे ही एचआरएम में क्या होगा कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो नॉट क्लियरली स्टेटेड, जो क्लियरली बताई नहीं होती, कहीं लिखी नहीं होती, एंड द एक्शंस ऑफ मैनेजर पर्टिकुलरली एट हायर लेवल प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू एक्शन ऑफ लोअर लेवल। तो हायर लेवल के जो भी बंदे होते हैं, जो हायर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनके वर्क के थ्रू लोअर मैनेजमेंट से सीखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज आफ्टर इम्प्लाइड पॉलिसी, नेक्स्ट इज जर्नल पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज जिनको, जो जर्नल होती है, जिनको लाइक जो जर्नल कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। जर्नल पॉलिसी रिफ्लेक्ट द बेसिक फिलॉसफी एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द ब्रॉड प्लान ऑफ mapping out the organization
टॉप मैनेजमेंट के बेसिस के ऊपर बेस होती है, दैट इज कॉल्ड जनरल पॉलिसी। फिर स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को कवर करने की भी जो पॉलिसीज बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉलिसी, सच एज हायरिंग, रिवॉर्डिंग एंड द बार्गेनिंग। अगर हायरिंग की भी कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई गई है, रिक्रूटमेंट की भी कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉलिसी। तो ऐसी पॉलिसी जो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्पेसिफिक इशू के लिए बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉलिसी। Then next is the written policy. The written policies are explicitly stated formal statement of the management intentions. So written policies means ऐसी policies जो आपके written में है, जो आपने written में stated करी है, that policies will be known as written policy. Okay. So this is about the types of policy. Now in next lecture we will discuss the formulation of policies, human resource policies, and factors that are affecting the human resource policy.